Hello everyone, how are you? Welcome all you on my channel of Let's Begin. Let's begin with our Let's Begin channel, and we will start with a topic called interrupt. We know interrupt part is very important in microprocessor 8085. So let's begin. See, interrupt normally, what do you mean by interrupt? Interrupt means you are interrupting someone, you are disturbing someone, right? Like that. So in this way, first of all, we'll see what is interrupt. Basically, you can see in the definition of interrupt, what you can see in the definition of interrupt, that interrupt is a signal which is sent by an external device to the processor to request the processor in order to transfer the data, the peripheral or the microprocessor. Means simply it, from that what you're coming to know, that interrupt is one of the type of signal which is sent by some of the external devices to the processor, and it make request to process the order, and it make a request to the processor in order to transfer the data in the peripheral or to the microprocessor. Now you can see the types of the interrupt. There are two types of interrupt: software interrupt and the hardware interrupt. Normally software interrupts are of 8 types and hardware interrupts are of 5 types, but both interrupts are very important, but hardware interrupts plays a vital role in it. But we'll see both of us, software interrupt as well as hardware interrupt. First of all, we'll see about a software interrupt. Normally the software interrupts of microprocessor 8085 are of 8 types, right? They were started from RST0 to RST7, means like that: RST0, RST1, RST1, RST2, RST3 till RST7. The total 8 types of this were there. RST is one of the type of instruction, and this instruction states a meaning of restart. Okay, and you and the syntax, you can see here the syntax is also given to you, rstn. As both of the instructions are there, this one of the most important point, that last point, the data transfer between memory and microprocessor, I will explain you at the comparisonal point to you. Okay, now hardware interrupt, you can see that one of the box that I created for you is a very important box. You can remind this, you can remind whole concept of microprocessor 8085 interrupt. First of all, you can see there are 5 types of interrupts. You can see trap, RST 7.5, 6.5, 5.5 and INTR. These all are the 5 types of the interrupts are there. Now these are the vector address, this is maskable, non-maskable, and this is the age level triggered. So first of all, we will see each one of the interrupt. First interrupt is a trap interrupt. Its vector address is 0024H. And maskable or non-maskable, first of all we will see what is maskable and non-maskable. Normally maskable or non-maskable means you cannot avoid it. Suppose in during the instruction, during some process, the microprocessor was performing some operation like addition, and during that time interrupt instruction was come, and it was that is of the type of trap. So during that addition operation, that addition operation has to resume for some moment, has to pause for some moment, and it has to see to the trap instruction. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी जो trap instruction है, जैसे ही ये आई तो इसको वो इंस्ट्रक्शन अवॉइड नहीं कर सकते. कोई भी ऑपरेशन प्रोसेस में चल रहा हो, फिर भी आप उसको क्या नहीं कर सकते, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको ट्रैप इंटरप्ट को जाके देखना पड़ेगा. मस्केबल नॉन मस्केबल सिंपली यही होता है कि आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते. अवॉइड कर सकते मतलब मस्केबल, नॉन मस्केबल यानी आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते. आप आपका ऑपरेशन रुकाइए और पहले उसको कीजिए. दैट इज nothing but and maskable, non maskable. नाउ एज ट्रिगर लेवल, जो ट्रिगरिंग लेवल होती है वो नॉर्मल लेवल है उसका. फिर नेक्स्ट वाला है RSA 7.5 जो 003CH, इसका वेक्टर एड्रेस है. मस्केबल नॉन मस्केबल, तो ये मस्केबल टाइप है. आप इसको बोल सकते हैं कि भाई ये इंस्ट्रक्शन कम होने कंप्लीट होने के बाद आई विल सी यू. सो इन दिस वे यू कैन, तो आप उस इंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं बाद में. इसका जो लेवल है वो है राइजिंग एज लेवल है इसका. फिर नेक्स्ट है RSS 6.5 जिसका वेक्टर एड्रेस है 0034H. ये भी मस्केबल टाइप है और इसका भी नॉर्मल लेवल है. नेक्स्ट है RST 5.5 जो 0032CH एड्रेस है, ये मस्केबल है और इसकी लेवल है. INTR जो है इसका कोई वेक्टर एड्रेस नहीं होता है, ये नॉन वेक्टर्ड एड्रेस, मतलब इसको हम नॉन वेक्टर टाइप बोल सकते हैं. दैट इज INTR. नॉर्मली ये डिसाइड करता है
ऑन द बेसिस ऑफ द हार्डवेयर जो इसको मिलेगा उसके बेसिस पे ये डिसाइड करता है। ये मस्केबल टाइप का और इसकी जो लेवल है वो लेवल है। नॉर्मली क्या हम बोल सकते हैं कि ट्रैप का लेवल सबसे हाई है, ये नॉन मस्केबल है, मतलब आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। ये जो भी लिखे हैं ये प्रायोरिटी के सीक्वेंस में लिखे गए हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे और फिर उससे नीचे। इन दिस वे यू कैन रिमाइंड इट, ओके। और लास्ट पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था कि डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड चिप, जब अब आप लोगों को कौन सा इंटरप्ट यूज़ हुआ ये कैसे समझ में आएगा। अगर आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट यूज़ होता है तो ड्यूरिंग दैट सिचुएशन मेमोरी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और जब हार्डवेयर इंटरप्ट होगा ना तो डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा बिटवीन आईओ एंड माइक्रो प्रोसेसर। और जब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट अगर रह गया तो फिर आपका डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में। सो आई होप ऑल द पॉइंट्स ऑफ इंटरप्ट वी हैव कवर्ड कि व्हाट इज़ इंटरप्ट, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट शॉर्टली, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट, short tricks I had told you to remind it. So please like, subscribe the video. If you have any of the doubt you can write in the comment section, so that in the further upcoming video or in this video in the comment I will give you the solution of that problem. So please like, subscribe this video as much as you can. Thank you.